Hello everyone, welcome to my channel Quick Edu। आज के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जिसे हम यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। सो व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल refers to capital invested for acquiring fixed assets. Now if we take some example of fixed assets, अगर हम देखें तो हमारा जो घर होता है, हमारे घर उसके अंदर जो हमारे कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर होते हैं, फर्नीचर होता है, जो हम हर रोज नहीं खरीदते हैं, एटलीस्ट वो हमारे घर में काफी सालों तक रहते हैं। ऐसे ही कंपनी की कुछ ऐसी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो कंपनी के अंदर परमानेंटली रहते हैं। Okay, they can be land, building, furnitures, plant and machineries, etc. So fixed capital is basically a capital जो हम use करते हैं to purchase the fixed assets of the company. It stays in the business for long period, almost permanently. Yes, we are not going to purchase it again and again. It will stay in the business at least for more than 10 years, 12 years. So it almost say permanently. Fixed capital fundings can come from selling shares, debentures, bonds, long-term loans, etc. फंडिंग की जरूरत पड़ती है। यस, फिक्स कैपिटल रेज करना है तो हम कर सकती है कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स, दैट इज द इक्विटी शेयर्स और द प्रेफरेंस शेयर्स, और दे कैन आल्सो इशू बोरोड कैपिटल व्हिच आर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सेट्रा। Fixed capital is used for purchasing fixed assets such as land and building, furniture, plant and machinery, etc. I told you, fixed capital वो capital है जो utilize किया जाता है to purchase the land and building, furniture and plant and machinery of the company. Investors invest money in fixed capital hoping to make future profit. Definitely जब भी हम कोई fixed capital raise करते हैं या invest करते हैं तो obviously हम future profit के लिए ही उसे रखते हैं। Okay, so hope you all understood this. What is fixed capital? Fixed capital refers to capital invested for acquiring fixed assets. It stays in the business for long period, almost permanently. Fixed capital funding can come from selling shares, debentures, bonds, long-term loans, etc. Fixed capital is used for purchasing fixed assets such as land and building, furniture, plant and machinery, etc. Investors invest money in fixed capital hoping to make future profit. कंपनी जब नई स्टार्ट होती है, न्यूली जब वो रजिस्टर्ड होती है, उस टाइम पे प्रमोटर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स कौन से हम लेंगे कंपनी के लिए, एंड उनकी सारी एस्टिमेशन, उन कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदनी है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है, उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाना, बजटिंग करना, एवरीथिंग इज डन बाय द प्रमोटर्स इन द इनिशियल stages when the company is getting incorporated. So let us see some steps how the promoters are doing this. Like in initial stage, the promoter is the person जो initiative लेते हैं कंपनी को establish करने के लिए या कंपनी को incorporate करने के लिए. So they will prepare the list of FA needed. FA is fixed assets needed in the company. In the initial stages इतनी ज़्यादा fixed assets की ज़रूरत नहीं होती है, but whichever is required उसकी list बनाई जाती है, promoters उसकी list बनाते हैं. Promoters estimate the cost of required fixed assets. Once the list is made, then promoters are going to estimate the cost. कितना cost उसमें invest करना होगा to purchase the fixed assets of the
company. Then the collection of price of land and cost of construction, plant and machinery. Then they are going to collect the information कि कितना cost लगेगा land के लिए, constructions के लिए, plant and machinery के लिए. So they are going to evaluate each and every part and then they will come to any conclusion. Then cost is calculated and the total figure would be the requirement of fixed assets in a new firm. Everything is evaluated and then they come to a conclusion, and that conclusion is the cost which is calculated, and it is the total figure that whatever is required in the fixed assets in the company. So due to modern industrial process, use of heavy and automated machineries have increased. तो इससे क्या होता है, हमारा fixed asset में investment भी बढ़ जाता है. Fixed assets में investment भी बढ़ जाता है. So in initial stage, promoters क्या करता है? Promoters prepare list of fixed assets needed. Then promoters estimate the cost of required fixed assets. Then he collects information of price of land and cost of construction, plant and machinery. Cost is calculated and the total figure would be the requirement of fixed assets in new firm. Due to modern industrial processes, use of heavy and automated machineries have increased. This increased the investment in FA, that is fixed assets में ज़्यादा हमारा investment हो जाता है. So, an entrepreneur obtains fund for the purchase of fixed assets from capital market. As we all know that capital market is open. If we want to purchase fixed assets, we are going to raise the capital from the market. So funding can come from, or the company can raise the funds through debentures, issue of shares, bonds, or obtaining even long-term loans. They can also obtain it through banks. Loan लेके भी वो fixed assets अपने परचेज कर सकते हैं. Okay. Next, let us see the factors affecting fixed capital requirement. Now, there are some factors which will affect the requirements of fixed capital. Okay. Now, let me take an example. अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कम है. हमारे घर भी will not be big, we can say. It will be 1 BHK, 2 BHK. But if we have a large family, then we have to purchase a big house. Correct. And if we are staying in nuclear family, हमारा जो everyday expenses भी होंगे या जो fixed assets की requirement होंगी वो भी कम होती है. Yes, अगर वही चीज हम अगर देखें joint families में देखें तो वहाँ पे ज़्यादा होती है. This is just an example to make you all clear about the requirement. So here it is basically that the nature of business. If I have a manufacturing business, ओके और मेरा पब्लिक यूटिलिटी है, सर्विस है, तो मुझे लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड एसेट्स के लिए. ओके लेकिन अगर वही मैं ट्रेडिंग कंपनी है मेरी तो मुझे वहाँ फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग टू वर्क मोर ऑन ऑनलाइन. यस, मोर ऑन ऑनलाइन बेसिस पे मैं काम करूंगी तो वहाँ पे मुझे फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो मुझे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने तक का जो भी प्रोसेस जितना भी लगता है उतना टाइम उतना मुझे जगह भी चाहिए. Yes, each and every process need the space, need labor, need machineries. So that much big will be my requirement of fixed assets and also fixed capital. Okay, so the first point here is nature of business. So what is the nature of business? Manufacturing industries and public utilities invest huge amount. Trading business do not invest more. Now we can take trading example के लिए, trading business के लिए हमारा Amazon है, यस हमारे फ्लिपकार्ट है, ये सब ऑनलाइन वर्क करते हैं. करेक्ट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ गए हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए प्रोसेस करती हैं. यस हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत सारा मशीनरीज लगता है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड यूज होता है. Yes, public utilities, we can say electricity bill जहाँ हम भरने जाते हैं because everybody is going to come there. Yes, telephone exchanges, so they are having huge land and lot of space because it is public utility. Okay, services they are providing.
Next is size of business. Yes, it also affects. Business firm carrying on large scale operations, fixed capital requirements are high because of automated machines and equipments. ओके आई टोल्ड यू फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड बनने के लिए जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा हमारी मशीनरीज लगेंगी, उतनी ज़्यादा हमारा इक्विपमेंट्स होंगे, सो दैट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हायर. Next is scope of business. The scope of business firm which carry on production and distribution on large scale require huge investment in FA. ठीक है, जो प्रोडक्शन करती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशंस भी करती हैं उन्हें लार्ज स्केल रिक्वायरमेंट होगा fixed assets का. Next is extent of lease or rent. If entrepreneur decides to acquire assets on lease, less amount of funds for fixed assets will be needed. Yes, अगर आप सोचते हो कि मुझे रेंट पे लेना चाहिए जगह, the factory where I am going to produce the products, then yes, definitely आपका जो rental है is less compared to the purchasing cost. So yes, it will help you कि वहाँ पे कम use होगा आपके funds का. Less amount of funds will be used there. Arrangement of subcontracts. Business wants to subcontract some process of production to others. Limited assets are required to carry out the production. Now what does this mean? That means कि कुछ process जो raw material से finished good बनाने के लिए जो process लगता है उसे हम किसी और को दे सकते हैं, where we can just give finishing to the product and the raw material is going to be prepared somewhere else. Okay, so there are 5 points here. One is nature of business, size of business, scope of business, extent of lease or rent, arrangement of subcontract, and the points in front of them are the keywords for you all to remember and explain the point. In your exam. So when you're making this in sentences, almost 4 to 5 sentences हो जाता है and आपका जो आंसर है वो fulfill हो जाता है to secure more marks. Okay. Next is acquisition of old assets. If old equipments and plants are available at a lower price, this reduces the investment in fixed assets. This is very true. Yes, अगर हम old asset अगर वो अच्छे से चल रहा है, अगर हम कंपनी को कोई मशीनरी की जरूरत है and second handed वो अच्छी मिल रही है, yes, it is working properly, उसका जो production है वो भी अच्छा है, so that is good, you know, as compared to new product ये सस्ते में मिल जाएगी, low price में मिल जाएगी, which will again help us to reduce the investment in fixed assets. Acquisition of assets on concessional rate. Fixed assets made available by the government on concessional rates on land and buildings and plant and equipments on installment basis. Yes, we all know that there are installment basis. Government has many concessional rates, so we can also acquire that. Yes, इससे भी क्या होगा, हमारा जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाता है. International conditions significant for large business organizations on international level. Example, companies expecting war may decide to invest large funds before there is shortage of materials. Yes, again, if you never know कि कब war हो जाए या when situations are unpredictable. Okay, so in these cases अगर कुछ ऐसे लगे हमें कि कुछ ऐसे होने वाला है तो कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने फंड्स इन्वेस्ट करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड सो दैट आगे जाके शॉर्टेज ना हो रॉ मटेरियल्स की या कोई भी चीज जो कंपनी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस द गुड्स, वो सारी चीजों को वो पहले ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं. Trend and economy, yes, this is a very important part. If future is bright, it gives green signal to company for expansion. This results in large amount investment in fixed assets. Trend and economy, if you see, you know, when you're working, you understand that हमारे product की कितनी demand हो रही है बाहर, and we also get an eyesight that हाँ हमारा product अच्छा ही चलेगा आगे, it is trending nowadays. Okay, so this is going to give the company a green signal. Yes, there is an expansion and this will also result in investment in large amount of investment in fixed assets.
Okay, acquisition of old assets, acquisition of assets on concessional rate, international conditions, trend in economy. Next factors are population trend. Yes, very difficult to understand population trends. Yes, वो बहुत जल्दी जल्दी change होती है. If population increases, opportunity to expand business also increases. Definitely. Nowadays, if we talk about the products जो बहुत ज़्यादा demand में है, वो है हमारे electronic products, the laptops, mobiles, because हर चीज़ online हो चुकी है. Yes, then एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स दिस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स ओके सो जो कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को बनाती होंगी उनका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है फॉर फिक्स्ड एसेट्स कंज्यूमर preference. Industries providing goods and services which are in good demand, this will require large amount of investment in fixed capital, such as mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. Yes, mobile खरीदा है तो उसके अंदर network भी होना चाहिए तो ये दोनों companies तो बहुत अच्छे डिमांड में है इनका गुड डिमांड होगा यस तो इनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा जिस कंपनी की डिमांड ज्यादा है मार्केट में उसका फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है आपने देखा होगा जगह जगह गैलरीज बन जाती हैं यस एयरटेल की है वोडाफोन की है हर जगह गैलरीज बन जाती है यस व्हाई बिकॉज दे आर इन डिमांड each and every person is having a mobile and if they are having a mobile they are having network they have little problems so these galleries will open and the demand is always increasing. Competitive factors prime element in decision making. If one of the competitors shift to automation, the other companies in same line are compelled to follow the competitor. Yes, हम old चीजें अगर हम हमारा old tradition use कर रहे हैं to produce the products and one of our company the कॉम्पिटिटर कंपनी अगर वो ऑटोमेशन में आ जाती है तो डेफिनेटली ऑटोमेशन में आने से क्या होता है द प्रोडक्ट्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है साइज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जो मैनुअली 10,000 होता होगा वो मशीनरी से 1 लाख हो जाता है सो डेफिनेटली उनका सेलिंग ज्यादा हो जाएगा यस बिकॉज दे कैन एक्सपांड देयर सेलिंग दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द पीपल सो वो मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं इसीलिए अगर एक कॉम्पिटिटर अगर शिफ्ट होता है फॉर ऑटोमेशन तो others in line have to use that have to invest in fixed assets.